practice set 7.1 for mensuration. Okay, so in this let's see what is the figure given. It is a figure something like this. So always draw the figure, तो एक आइडिया आ जाता है आपको. ठीक है. तो सिलेंडर और कोन ऐसा एक फिगर है. ठीक है. आई होप क्लैरिटी इज देयर, क्लियर है इमेज. द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द बेस. सो द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 centimeter and the area of the base is 100. So this area they are talking about. Area of the base is 100 centimeter square. What they have said is this radius R1 suppose is equals to R, and suppose this is the radius for the base, R2 is equals to R. So they have said that the radius of both the things is equal. Volume of the solid figure formed. Now volume means this entire thing. Volume of this plus this is equal to, so I'll just write over here given. So this is your figure. This is given what they are saying, volume of the figure is 500 centimeter cube. Okay, the total volume. Now we'll go part by part. Okay, solution, like how will you write it, how will you do it, that's the main point. कि कैसे आप present करते हो वगैरह वगैरह is more important for us. Okay, ठीक है. So volume of the figure is 500 centimeter. Volume of the figure अगर आप देखोगे तो it is made up of a cone प्लस अ सिलेंडर. कोन प्लस अ सिलेंडर वो आपको गिवन से ही समझ आता है. तो वॉल्यूम ऑफ द फिगर इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर. वी हैव टू फाइंड, आई शुड हैव रिटन इट अब ओनली बट वी कैन राइट इट ओवर हियर. फाइंड करना है हम लोगों को हाइट ऑफ द फिगर. ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. वील फाइंड द हाइट ऑफ द फिगर. कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है. नाउ let's see, for cone, for cylinder हम देखेंगे कि कौन से वैल्यूज दिए गए. R1 is equals to R2 कोन के लिए. R1 is equals to R2 is equals to R. We have only one. Here also R1 is equals to R2 is equals to R. Okay. Moreover, इधर दिया गया है height. Say suppose we take H2 is equals to 3 centimeter. Height of the cone, because this is the height of the cone. Okay. H1, suppose if we take, it is unknown. We do not know. So H1 is equals to unknown. We do not know. Total height of the figure will be H1 plus 3. तो पहले हम लोग H1 फाइंड करेंगे, फिर इसको H2 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. But before that, they have also given you area of base is equals to 100 centimeter square. This area of the base will help you find R and both the R's are equal, तो ये R मिल जाएगा. You can see figure है, उसका एक width same है एकदम proper, तो वो radius से determine करते हैं. ठीक है. So in this first step we will do area of base of cylinder is equals to 100 centimeter square. Therefore, that is equals to area of the base is given by pi r square is equals to 100. Okay. Therefore, now हम नॉर्मली जब हम लोगों को वॉल्यूम में सब्स्टिट्यूट करना है तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू लगेगा. तो हम लोग therefore pi r square is equals to 100 centimeter square ऐसे ही फ्रीज करेंगे. You will not find out the value of r because इधर आप पूछा ही नहीं गया है. We do not require it, so keep it as it is. कब as it is रखना है कब नहीं वो हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं. Here they have asked you the height, तो सिर्फ हाइट पे ध्यान दो
Area of the base is not required. I'll show you how we will substitute this pi r square directly. Next step, डायरेक्टली अभी दिया क्या गया है, आई ऑलवेज टेल यू जो गिवन है वो हमारा हिंट होता है. तो वॉल्यूम ऑफ फिगर इज इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर्स क्यूब. बट वॉल्यूम ऑफ द फिगर इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equals to 500 centimeter square cube. Sorry. Okay. So अभी हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. Therefore, volume of the cone is given by 1/3 pi r1 square h1 plus pi r2 square h2 is equals to 500. Okay, now we can keep this aside. Now see over here kids, हम लोग replace करेंगे 1/3 pi r square because r1 is equals to r2 is equals to r. तो जिधर भी r1 r2 है उधर r replace करेंगे. आप इधर भी directly लिख सकते हो आपका काम बचाने के लिए h1. Why am I putting this in the bracket? Because we have this plus pi r square h2 is equals to 500. Therefore, let's substitute the value, and h1 is nothing but h1 in the figure is given by, we don't know h1, but h2 is 3 if I am not mistaken. सिलेंडर का हाइट दिया है. ओके, सो वी डोंट नो h1, सो वी विल कीप इट एज 100 h1 upon 3 plus 100 into 3 is equals to 500. Therefore, we'll take LCM now. Okay, so 3 is the LCM. It becomes 100 h1 plus this is 3 3s are 900. See, cross multiply. 3 comes here, 3 3s are 9 into 100 is 900, and this is 1 is equals to 500. Now again cross multiplication, but ऐसा तो ये होगा 100 h1 plus 900 is equals to 1500. Therefore 100 h1 is equals to 1500 minus 900 upon 100. Therefore, h1 is equals to 600 upon 100. Therefore, h1 is equals to 6 centimeter. Now, the sum doesn't get over here. You have to complete it. Therefore, height of the figure is h1 plus h2, that is equals to 6 centimeter plus 3, that is 9 centimeter. Height of the figure. This is your answer. टेक्स्ट का आंसर 9 सेंटीमीटर है जो गलत प्रिंट 5 सेंटीमीटर दिया है जो गलत है. Okay, so but the right answer is 9 centimeter. I've cross-checked everywhere and this is your answer. Now, this was for your sum number 7. Okay. Let's move on to sum number 8. Sum number 8. Okay. Now, we have a figure which is something like this. See now what is it? I'm drawing in parts so that we know. Hemisphere है इधर, इसके bottom पे hemisphere है, ठीक है. Then cylinder, okay, and then you have the cone. ठीक है, very easy figure, एकदम आसान दिया गया है. ये है आपका ऐसे, ये insides का है. ये height दिया है, means इधर से इधर तक
4 सेंटीमीटर है. ओके, देन दिस इज 3 सेंटीमीटर. नाउ सी किड्स, ये एकदम इवन फिगर है ऐसे थ्रू, तो इसको भी आप इवन, ये भी इवन रहता है थ्रू आउट, तो इसका रेडियस इक्वल रहेगा थ्रू आउट. ये ऐसे बड़ा नहीं हो रहा है, ऐसे ये एक लेंथ में रह रहा है. तो सिमिलरली दिस इज इक्वल. तो इफ रेडियस फॉर दिस पर्टिकुलर कोन इज 3, फॉर सिलेंडर विल ऑल्सो बी 3, फॉर हेमिस्फीयर विल ऑल्सो बी 3 सेंटीमीटर. ओके, हाइट फॉर द सिलेंडर इज गिवन एज 40 सेंटीमीटर. ओके, नाउ हम लोग इसको टुगेदर ही फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे करेंगे. ठीक है, नाउ व्हाट आर दे सेइंग? इन द फिगर, टॉय इज मेड फ्रॉम अ हेमिस्फीयर, अ सिलेंडर एंड अ कोन. फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय. टोटल एरिया फाइंड करने के लिए पहले तो स्लांट हाइट लगेगा. टोटल सरफेस एरिया, तो देखो नॉर्मली टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो व्हेन यू सी दैट वर्ड टोटल ना, व्हाट मिस्टेक्स डू यू डू? फिर इसका आप टोटल सरफेस एरिया करोगे, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया करोगे, पर इसका टोटल सरफेस एरिया करोगे. पर टॉय के लिए हम लोगों को इसका कर्व्ड लगेगा, इसका भी कर्व्ड लगेगा, इसका भी कर्व्ड लगेगा, क्योंकि ये सब आइडेंटिकल है, तो ये एक दूसरे को मैच ओवरलैप करेंगे, तो ये हम लोगों का एलिमिनेट हो जाता है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका. तो सो फॉर दैट वी नीड स्लांट हाइट. तो पहले हम लोग उसके लिए करेंगे. सो दिस इज योर फिगर गिवन, तो हम लोगों ने ऑलरेडी मार्क किया है. देन फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर. सॉल्यूशन. ओके, सॉल्यूशन क्या करेंगे हम? सो देयरफॉर इससे पहले फर्स्ट स्टेप होगा फॉर कोन, फॉर सिलेंडर, फॉर हेमिस्फीयर. हम लोग सारे क्वांटिटीज लिख के रखते हैं. फॉर कोन, नाउ फॉर कोन वी हैव the radius r1 is equals to r2 is equals to r is equals to 3 centimeter. Okay, then h1 is equals to 4 centimeter. So slant height will be under root 3 square plus 4 square, or I'll write the formula, it will be better, under root r square plus h square, r1 square h1 square if you want to write. Therefore L is equals to under root 9 plus 16. Therefore L is equals to under root 25, that is 5 centimeter. Okay, so now for cylinder, R1 is equals to R2 is equals to R is equals to 3 centimeter. Okay, this is common for everybody. H2 will be 40 centimeter. इसके लिए तो हेमिस्फीयर we don't have any other quantity. R1 is equals to R2 is equals to R is equals to 3 centimeter. So this is for your, so if you write over here for cone, for cylinder, for hemisphere, तो आप लिखोगे तो सारे, when you write these particular quantities it becomes much more clear to you what do you need. Okay, now we'll move on to your sum. Okay, let's see now. They have told us to find total surface area. So we say total surface area of figure or toy, you can say, is equals to formula pi RL plus 2 pi, so पहले इसका pi RL, then we have this 2 pi RH for cylinder, 2 pi RH2 plus, we don't have anything else for this but 2 pi R square. See कितना pi and R is common, pi R and pi R is common. Calculation में easy हो जाता है. I'm going to do detailed calculation so that you all understand the sum. Okay.
तो आप लोग मेनली इधर कैलकुलेशन का ही काम आता है. पाई आर becomes L plus, let's see what we have, 2 into H2 we have plus 2 into R. Now we'll put the values. Pi keep it as it is. R we have 3. L we have 5 plus 2 into H2 is 40 plus we have 2 into 3 is 6 again. So therefore pi 3 into 5 plus 2 into 40 is 80 plus 2 3s are 6. So it becomes 1 carry 91. So we have 91. Then we have 91 into 3. 3 1s are 3, 3 9s are 27. So we have 273 and pi centimeter square. Okay, you can stop over here. You do not need to go further. Okay, so this is for your sum number 8. Now sum number 9 is as easy. Okay, sum number 9 is easy. For that, move on to the next page so that you get a clear understanding. Now जैसे मैंने बोला आपको बिगर क्वांटिटी जो बड़ा जिसमें से आप so suppose ये रैपर है. So what they saying in the figure cylindrical wrapper of flat tablets is shown. तो एक बड़ा रैपर है, इसमें से हम लोग so this is your wrapper. मैं इसको अभी रेक्टेंगल में कट कर रही हूँ, but do not get confused. Okay, it will be turned and wrapped into a cylinder. Okay, तो रैपर के दोनों भी साइड. सो जब आपका ये बड़ा रैपर है, इसको दोनों साइड से ये भी साइड रहेगा, ये भी साइड, और ये पूरा जो इसको कट करके इसमें बहुत सारे टैबलेट्स बनने वाले हैं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस big pieces and use it for wrapping my tablets. तो similarly suppose आपके घर में मैं अगर in your house if you all are 5 friends, okay, and I buy 20 apples and I have to divide it equally among the 5 people. तो क्या होता है, बिगर क्वांटिटी जो आपका है 20 एप्पल्स का उसको 5 से डिवाइड करते हैं तो हमको समझ आता है 4 एप्पल्स ईच को मिलते हैं. तो यही लॉजिक लगाकर हम लोगों को यही करना है. एनी बिग नंबर हैज टू बी डिवाइडेड अमंग इक्वली अमंग दीज. तो हम लोगों ने डिवाइड किया बिगर क्वांटिटी अपॉन द स्मॉलर क्वांटिटी. यस, बिगर क्वांटिटी अपॉन द स्मॉलर क्वांटिटी. ठीक है. और आई कैन से अगर मेरे पास 20 एप्पल्स है और हर एक को 5 मिलने चाहिए तो कितने बच्चों को मिलेंगे. तो उसमें वही होता है 4 बच्चों को मिलेंगे, है ना. तो वैसे ही ओके सिमिलरली इफ वी सी इफ आई हैव दिस बिगर रैपर आई एम गोइंग टू कट इफ आई हैव एंड वन रैपर को मेरे को रैप करने के लिए एक पर्टिकुलर क्वांटिटी लगता है तो कितना लगेगा. ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं इसमें वी विल टेक द पाई आर स्क्वायर h1 पाई आर स्क्वायर h2. ठीक है. You can. So how many such tablets are wrapped in the wrapper? So what we will take is we will take surface area sums where you have to find the number of the quantity. So for tablet for wrapper easiest way is volume 1 upon volume 2 करना है. वॉल्यूम ऑफ द बिगर वन अपन वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर वन. फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको बताया था कि एक बिगर क्वांटिटी इफ अ बिगर क्वांटिटी हैज टू बी डिवाइडेड मतलब एक पर्सन को सपोज 1 पर्सन ये 5 के बदले आप समझो ये 1 पर्सन को 5 एप्पल्स मिलने चाहिए और मेरे को 20 डिवाइड करना है तो 4 लोगों में वो एप्पल बटेंगे. सिमिलरली मेरे को ये रैपर से कितने टैबलेट्स करने हैं तो रैपर का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 वॉल्यूम. ओके, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को डिवाइड करना है तो टैबलेट का देखेंगे. सो रेडियस इज एज आई टोल्ड यू इट रेडियस इज गिवन हियर r1 इज इक्वल्स टू 7 mm that is 0.7 centimeter converted into centimeter. Then we have height 1
देखो अभी इधर एक टैबलेट का थिकनेस दिया गया है, ओके, थिकनेस इज नथिंग बट योर हाइट, थिकनेस नथिंग बट हाइट हो जाता है, तो 5 mm दिया गया है, ठीक है, तो हम लोग उसको लेंगे 0.5 सेंटीमीटर. Similarly, now R2 is equals to 14 mm. ये आपको 14 mm upon 2 क्योंकि डायमीटर मार्क किया गया है, if you can see in the figure. Okay, so that is equals to 7 mm. That is nothing but again 0.7 सेंटीमीटर. Now इधर कंफ्यूजन हो सकता है तो गलती मत करो. H2 दिया गया है 10 सेंटीमीटर, सो प्लीज डू नॉट कन्वर्ट दिस. ऐसे हो जाता है, हम लोग फ्लो में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है. सो नंबर ऑफ टैबलेट्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रैपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिंगल टैबलेट. Therefore that is equals to, वॉल्यूम कैसे दिया जाता है, पाई R2 स्क्वायर H2 अपॉन पाई R1 स्क्वायर H1, अगर हम लोग बाय फॉर्मूला, ठीक है, फॉर द सिलेंडर. नाउ पाई एंड पाई गेट्स कैंसिल. R2 is nothing but here R2 is 0.7 into 0.7 into 10 upon, we have over here R is nothing but 0.7 into 0.7 into we have 5. Okay, so let's see what happens. Everything gets cancelled. We have, sorry, this is 0.5. So 0.5 का 0 ऊपर चला जाता है and upon 5. Therefore number of tablets is equals to 20. So the number of tablets that can be made are 20. So for anything, जब भी आपको number of कोई भी चीज पूछा number, so volume of upon the bigger quantity upon volume of the smaller quantity. Thank you. Meet you in the next part. I hope you've all enjoyed this part of the chapter series just as you would enjoy your favorite book with a hot cup of tea. So, ECOT, that is everyone's cup of tea, will bring to you many more such chapter series along with detailed explanation and solution of the exercises that are there in your textbook. We wish to bring to you this and more at zero cost so that the hardest chapters become your cup of tea. So, help us by clicking on this button. Get notified about our upcoming chapter series. Also, share it to help us define education through equality. Do message us any doubts that you have on our Instagram handle, Everyone's Cup of Tea, and we promise to answer them. Thank you and keep sipping. Bye.